यहाँ से देखो ଆସୁଛି ଭଏସ୍ ଆପୁଜା ଆସୁଛି ଆସିଲା ନା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଡନ୍ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ସାର୍ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ସାର୍ And it's okay to all. Is it fine? ଟିକେ ଦେଖିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ so okay so fine everyone so today we will go through the biodiversity of India. Good evening to all. Is it fine to all? No, it's fine to all. Done. So we will go through the biodiversity of India. So प्रथम कथा biodiversity meaning कौन हमें जानिबा कि what is the meaning of biodiversity. Hope this one is audible to everyone. Is it audible to all? Everyone audible to all? Fine. It's audible to all? Fine. Okay. It's okay to all? Is it fine? Sound ठीक ठाक अच्छी ना? Voice is coming fine?
प्लीज बी ऑन लाइव समस्ते लाइव है सब यूट्यूब रे लाइव देखि परियो समस्ते एक मिनट जस्ट वेट मानो यूट्यूब रे गूगल मीट रे आसुची कि यूट्यूब आसुची तो ठीक ठाक वॉइस ऑडिबल ओके फाइन सो जो मैं लाइव चैट करूचे से माने मते कहि परिबो ठीक अछि बायोडायवर्सिटी आम कनसेप्ट आगे जानिबा कि बायोडायवर्सिटी कोन देखो बायोडायवर्सिटी ये फिगर हमको जना पडुची नाउ दिस फिगर को ये फिगर को समझते देखो कि बायोडायवर्सिटी रो मीनिंग कोन कहले डाइवर्सिटी अर्थात कोन विविधता जाको हम को विविधता सो बायोडायवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक लाइफ ओके डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक लाइफ तो सिंपल आम जदि हम कहबा एबे मस्त मते टिके लाइव रे कमेंट कर दियो जो माने लाइव देखु जो मते टिके कमेंट कर दियो सब ठीक ठाक आसुची पूरा एवरीवन सुनीता जेमति कि मते कमेंट करछंती ओके सो बायोडायवर्सिटी हम जदि हम देखिबा दैट मींस बायोडायवर्सिटी कहले बायोटिक लाइफ अच्छा बायोटिक कंपोनेंट कहले कोन जदि हम देखिबा बायोटिक कंपोनेंट मींस द एवरीथिंग एनीथिंग इज हैविंग द लाइफ जहार लाइफ अछि हम ताको बायोटिक कंपोनेंट बोली कहचे तो बायोटिक कंपोनेंट रे जदि हम देखा लेट्स से गोटे मस्किटो भी बायोटिक कंपोनेंट हे परे गोटे एलिफेंट हे परे गोटे तमरो फ्लोरा हे परे फौना हे परे बटरफ्लाई हे परे बर्ड्स हे परे ट्रीज हे परे हेन हे परे डियर्स हे परे दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट ये सब कोन होचंती ना बायोटिक कंपोनेंट्स सो ऑल दिस बायोटिक कंपोनेंट्स को जदि हम जेतला मिसई देउचे तो गोटी जगह रे केते प्रकार लाइफ देखा जाउची से गोटे बहुत छोटो लाइफ भी हे परे तो सिंपल जति आम कहचे कि गोटे जगह केते प्रकार लाइफ देखा जाउची लाइफ रो फॉर्म कोन है ना तो लाइफ रो जति आम देखिबा टाइप्स ऑफ सिंपल मु कहबी टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म जो लाइफ अछि ना है ना तो से लाइफ फॉर्म रो आम देखिबा जेते प्रकार लाइफ फॉर्म अछि हमको देखा जिवो जेते प्रकार लाइफ फॉर्म अछि तो टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म को आम कहबा बायोटिक डाइवर्सिटी तो फॉर एग्जांपल कौन सी बायोडायवर्सिटी आउ गोटे सिंपल मु कहूची कि बायोडायवर्सिटी रो मीनिंग हैला कि बायोटिक कंपोनेंट रो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट जेमति कौन सी जगह रे फॉर एग्जांपल एलिफेंट इज देयर ऑक्स और काउ इज देयर जैकल इज देयर मस्किटोज इज देयर गोटे बड़ प्लांट अछि किसी फ्लाइज अछि सो स्नेक्स वगैरह भी अछि तो ये सब को मिसै देला हम कहूचे गोटे बायोडायवर्सिटी है ना तो बायोडाइवर्सिटी बहुत आजिकल जमी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत एफर्ट दौरान गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल तो बायोडाइवर्सिटी फॉर एग्जांपल आम ओशन रो जितला एक्वाटिक इकोसिस्टम रे बायोडाइवर्सिटी देखुचे आम कहूचे रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन जाको आम कोरल्स कहूचे सेमती बायोडाइवर्सिटी ऑन द टेरिस्ट्रियल जदि आम देखिबा टेरिस्ट्रियल रे तो इट वुड बी टेरिस्ट्रियल रे जति हम देखो दैट वुड बी योर रेन फॉरेस्ट ये रहबो हमरो रेन फॉरेस्ट रहबो ओके ये तो हम जानि सारिचे जाबियो नेक्स्ट टाइम देखो सम ऑफ द इंपोर्टेंट डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी रो किछि इंपोर्टेंट डेफिनेशन हम देखिबा ओके
तो फर्स्ट आम देखा बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इन द वर्ल्ड फॉर ए पर्टिकुलर हैबिटेट और इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट कौन से गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट बा आम कहवा बायोस्फीयर गोटे कंपोनेंट और वी विल से द कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर कौन से गोटे बायोस्फीयर कंपोनेंट कथा नहीं जाओ बायोस्फीयर आम देखा बायोस्फीयर कहले बहुत बड़ एरिया तो तार आम गोटे बायोम कथा नहीं जाओ बायोस्फीयर गोटे बायोम कथा नहीं जाओ लेट्स से आम कहले कि टेम्परेट डेसिडस बायोम कथा नहीं जाओ लेट्स से इट वुड बी डेसिडस बायोम ये गोटे डेसिडस बायोम कथा नहीं जाओ और यू मे से के टेम्परेट कथा नहीं जाओ टेम्परेट बायोम कथा नहीं जाओ तो ये बायोम रे आम देखि परिबा दैट मीन्स आम देखि परिबा कि केते प्रकार ये रहउची हम पाखरे ओके तो सिंपल जदि मु कहबी कि हमरो डिफरेंट टाइप रो बायोटिक फॉर्म हमको देखा जाई पारे ओके तो बायोडाइवर्सिटी रे हम कोन देखबा दैट मीन्स कौन से एरिया रे केते प्रकार लाइफ फॉर्म देखा जाउची से गोटे छोटिया बैक्टीरिया ठु नै कि गोटे एलिफेंट गोटे व्हेल्स हे पारे तो केते प्रकार लाइफ रो फॉर्म हमको देखा जाउची तो दीटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हमको देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन देखि परिबो कि वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइव्स इन द वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट कौन से गोटे हैबिटेट रे बा जोठी हम कहबा से गोटे हैबिटेट लेट्स से भीतर कनिका नेशनल पार्क ए गोटे हैबिटेट हम कहबा किबा चिलिका हम कथा नै छ ए गोटे हैबिटेट तो ये जो हैबिटेट अछि ये हैबिटेट हम मानकर बा एटा गोटे बसस्थान हमको जोठी केते प्रकार वैरायटी देखाउची तो है ना द बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय टू इंपोर्टेंट कंपोनेंट स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस ये हमको देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी होप समस्त को बुझा पड़ो बायोडाइवर्सिटी अर्थ जेमति कहवा जे इंडिया इज द वन ऑफ द टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कले एठी बहुत प्रकार बायोटिक कंपोनेंट देखा जाए स्पीसीज रिचनेस अर्थ कोन देखो स्पीसीज रिचनेस कले ये कौन मेजर करे मेजर द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द कम्युनिटी गोटे कम्युनिटी रे केते प्रकार देखा जाउची फॉर लेट्स से मुखबी क्रोकोडाइल लेट्स से आई विल से क्रोकोडाइल और लेट्स से आई विल से कैट गोटे कैट कथा नै जबी किबा मु कहबी ऑक्स कथा नै जाओ ऑक्स कथा नै जाओ ए मान को कैट रो डिफरेंट स्पीसीज टाइप कहतले ब्लैक हे परे व्हाइट हे परे ठीक है रेडिश हे परे डिफरेंट तार स्पीसीज टाइप सेंत क्रोकोडाइल रो सॉल्ट क्रोकोडाइल मगर हे गेला घरियाल कथा नै जाओ व्हाइट क्रोकोडाइल कथा नै जाओ सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स हमें जाको कहचे है ना तो सिंपल हमें डिफरेंट टाइप रो क्रोकोडाइल्स को भी हमें नौचे तो स्पीसीज रिचनेस जेतरा हमें कहचे कि स्पीसीज रिचनेस इट इज मेजर द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन दैट कम्युनिटी से कम्युनिटी रो केते प्रकार स्पीसीज देखा जाउची ओके फाइन ना हो बुझा पड़ जो कि स्पीसीज रिचनेस अर्थ कोन ना कम्स टू द स्पीसीज इवननेस ना स्पीसीज इवननेस जेतरा हमें कहचे इज मेजर ये गोटे कोन होची ना हमें गोटे मेजर इवननेस इट इज मेजर ऑफ द रिलेटिव अबाउंडेंस of different species making of the richness of that area अच्छा एठी कोन रहइबो ना जति हम देखबा स्पीसीज गोटे हला रिचनेस गोटे हला इवननेस रे केते प्रकार कम्युनिटी जेमति कि ये गोटे कम्युनिटी रो दी चारि प्रकार देखाउची बट एठी हम देखबा जेमति गोटे टाइगर थिबो डियर थिबो रैबिट थिबो तो ये बहुत प्रकार थिबो दैट मींस दीज आर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज देखाउची और सेमान को गोटे बैलेंस रहइबो सो बोथ द सैंपल्स हैव सेम रिचनेस हम देखियो जेमति कि फॉर एग्जांपल अच्छा एक मिनट लेट मी इरेज ऑल है ना फॉर एग्जांपल मु कहबी कि स्पीसीज इवननेस रो हम देखिबा से कहछि इज द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस कहले गोटिए तुलना रे आउ गोटिए रो केते अछि जेमति चारिटा टाइगर अछि पांचटा डियर अछि छटा रैबिट अछि तो रिलेटिवली किए केते अछि है ना ये रहबा हमको रिलेटिव दैट वुड द इवननेस के रिलेटिव अबंडेंस केते एठी भी देखबा सेम स्पीसीज रो वैरायटी केते नंबर केते ये रहबा हमको डिफरेंस तो सिंपल जदि मु कहबी के स्पीसीज रिचनेस अर्थ कौन से गोटे पर्टिकुलर स्पीसीज रो डाइवर्सिटी फॉर एग्जांपल मु कहली कैट ये गोटे स्पीसीज तार डिफरेंट ये गोटे व्हाइट हे परे से गोटे रेडिश हे परे से गोटे ब्लैक हे परे तो डिफरेंट कलर रो हमको कोन देखाजबो और लेट्स से गोटे ग्रे कलर रो कैट हे परे so these are the richness of that same species है ना ताको हम कहते स्पीसीज रिचनेस तो सेमती जेतरा हम कहते स्पीसीज इवननेस अर्थात गोटे स्पीसीज रहला बेले बाकी स्पीसीज रो संख्या कोन अछि फॉर एग्जांपल 4 टाइगर अछि 6 डियर अछि 5 डियर अछि 6 रैबिट अछि है ना ये माने देखबे दे आर मेंटेनिंग ए बैलेंस ए गोटे बैलेंस को मेंटेन करूछंती है ना सो दैट वुड बी द इवननेस कहले गोटे तुलना रे आउ गोटे रो संख्या केते
or simple I would say in English it would be the relative abundance of the different species. Here we talk about the same species, but here we will talk about the different species, that is the species evenness and the richness. So low evenness indicate that a few species dominate the site. Both important. Here are example যদি তুমি দেখিবো, this is very important. से कहूँ low evenness अर्थात भाव कि suppose low evenness अर्थ कौन, टाइगर संख्या अधिक अलग से डियर संख्या अधिक रैबिट संख्या बहुत ही ज्यादा कम. That means कौन से गोटे जदि इविनेस कम रहुची अर्थात गोटे स्पीसीज मोर डोमिनेंट, भाव कि रैबिट संख्या 100 एंड डियर संख्या 5, दैट मीन्स द 100 इज बीइंग डोमिनेटिंग द साइट, ईच साइट को डोमिनेट करके रखिछि. तो जेतरा में लोअर इविनेस कहूचे कौन से गोटे स्पीसीज डोमिनेट करूची पूरा एरिया को. हियर यू कैन सी द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द स्पीसीज रो प्रथम में डाइवर्सिटी देखिबा and richness को देन आसीबा, then relative abundance को देखिबा. So देखो the species diversity of a community, the species रो diversity हम यदि देखिबा, for example ये देखो diversity, species diversity of a community है ना, is the variety of different kind of that is what kinds of organism that makes of the community. पूरा community has the two components. यदि हम देखो ऑलरेडी हम जानते हैं कौन सी जगह रे गोटे बायोडाइवर्सिटी बा डाइवर्सिटी ऑफ दैट कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, like the species richness बा आमी कहबा is the total number of different species in that community. आउ गोटे हला relative abundance. तो ध्यान से एटा देखियो बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट एटा कांसेप्ट तमरो. ये जेमति हम देखुतले कि species richness कहले the measurement of the number of species found in that area है ना, number of species. ध्यान से देखो फॉर एग्जांपल मु कहबी ये जेमति मु कहली गोटे कैट रो निजर ओन डाइवर्सिटी थाई परे प्लस डिफरेंट डाइवर्सिटी भी थाई परे. लेट्स से मु तो गोटे कैट रो देली, सेमति एठी तमरो डियर थाई परे, सेमति एठी तरो एलिफेंट थाई परे, लेट्स से एलिफेंट थाई परे, एठी तमरो हॉर्सेस थाई परे, तो डिफरेंट आसी जो भी. Here we will talk about, when we talk about the richness अर्थात बहुत सारा स्पीसीज अछि और तांकर विदिन दैट अमंग एंड विदिन बोथ वैरायटी रहबो, दैट इज आमी कहबा अमंग द स्पीसीज एंड विदिन द स्पीसीज बोथ डाइवर्सिटी वुड बी देयर, अमंग द स्पीसीज एंड विदिन द स्पीसीज रो डाइवर्सिटी रहबो. ओके, रिलेटिव अबंडेंस कहले गोटिए तुलना रे आउ गोटिए रो संख्या केते ताको कहै छै रिलेटिव अबंडेंस. सो दीज आर द आमी कहले कि हां रिलेटिव अबंडेंस कहते is the proportion of each species represents of the total diversity in the community. Total diversity रो तार संख्या केते आमी ताको बुझुचे है ना. so here species richness means the total number of species. तो ये तमरो जीव स्पीसीज रे. देन आमी आसबा अल्फा बीटा गामा. तो आर गोटे तुमको एठी गोटे डायग्राम देखि परिबो कि अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, ये प्रीलिम रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे जाए है ना, ये प्रीलिम रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे जाए. ठीक अछि, अल्फा बीटा एंड आमी कहबा दैट इज द व्हाट गामा डाइवर्सिटी. तो अल्फा कहले विदिन, ध्यान से मारको मु जेमते लिखु छी अल्फा कहले विदिन है ना, बीटा कहले बिटवीन, बीटा कहले बिटवीन, गामा कहले अमंग, गामा कहले अमंग. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो बेसिक डिफरेंस होची जेबे हमें कहूचे when we talk about the alpha diversity, that means the diversity within that community. So let's say for example this one is the flora, ये होची गोटे flora community. So alpha diversity means the diversity within that flora, and when you say the beta means between and gamma means among, the whole ecosystem रे जो diversity देखा होची that would be हमें कहबा gamma. बट दीटा इकोसिस्टम को जदि कंपेयर करो, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, ये दीटा को हमें कंपेयर करले ये गोटे इकोसिस्टम ये गोटे इकोसिस्टम, दैट वुड बी बेटा डाइवर्सिटी, इट वुड बी बेटा डाइवर्सिटी. ये गोटे इकोसिस्टम ये गोटे इकोसिस्टम ये गोटे इकोसिस्टम, दिस वे 3 4 चारटा इकोसिस्टम. तो चारिटा को जते हमें होल कंपोनेंट को हमें कंपेयर करबा इट वुड बी गामा. तनु करके मु लिखितली सिंपल अमंग के डाइवर्सिटी अमंग द कम्युनिटीज अमंग द डिफरेंट इकोसिस्टम. ये रहबा अल्फा बीटा एंड गामा. हो वेरी सिंपल कांसेप्ट हम देखिए अल्फा बीटा एंड गामा. राइट हम देखि देबा बे अल्फा बीटा एंड गामा कांसेप्ट को हम आउ थरे रिपीट कर देबा.
So alpha diversity जदि हम देखो it refers to the diversity within a particular ecosystem मु कहछि within मु आपे कोन यूज करथली within ओके सिंपल मु एको यूज करथली जति तमे देखिबो कि अल्फा डायवर्सिटी रे मु कहथिल कि within है ना अल्फा रे कोन कहबो डायवर्सिटी within that community ओके तो ये ऑलरेडी मु कहि सारी छी एक मिनट ठीक अछि सो जदि हमें देखिबा कि फॉर एग्जांपल हमें देखुतले कि अल्फा बीटा एंड गामा तो अल्फा रे हमें देखले कि विदिन दैट इकोसिस्टम से इकोसिस्टम भितर डायवर्सिटी केते अछि जेतरा हम कहते बीटा डायवर्सिटी कहले बिटवीन कहले देखाठी लिखा अछि बिटवीन सो कंपैरिजन करबा लेट्स से गोटे इकोसिस्टम ए आ गोटे इकोसिस्टम हम ताना देले बी तो दीटा को जेते हमें कंपेयर करबा दैट वुड बी बीटा कहले बिटवीन so that means beta diversity means diversity within that two दीटा इकोसिस्टम को कंपेयर करबा जा मिलबो गामा कहले हम कहले होल अमंग जहां पर कहते ओवरऑल डायवर्सिटी और इट वुड बी अमंग the diversity let's say 1 2 3 4 5 8 number nature then it would be diversity among all so that would be so that is what alpha beta and gamma तो हमें alpha beta gamma देखितले और देखे स्पीसीज रिचनेस और गोटे इवननेस सो रिचनेस कहले कोन ना केते प्रकार स्पीसीज हमको देखा जाउची है ना और रिलेटिव अबंडेंस को हम कहले दैट इज द अबंडेंस तो ये ताको हमें देखितले है ना देन हम देखो स्पीसीज डायवर्सिटी ओके अच्छा एक मिनट आउथे तुमको रिपीट कर दिए कि स्पीसीज रिचनेस अर्थ केते प्रकार स्पीसीज देखा होची तांकर निजर डायवर्सिटी एंड ओवरऑल डायवर्सिटी हम कहबा देयर ओन डायवर्सिटी प्लस हम कहबा ओवरऑल डायवर्सिटी एंड हियर रिलेटिव अबंडेंस हम देखिबा दैट मींस गोटिए स्पीसीज तुलना रे आउ गोटे रे संख्या केते बस ताको कहजो रिलेटिव अबंडेंस देन हमें जेनेटिक डायवर्सिटी आसीबा तो जेनेटिक डायवर्सिटी रो अर्थ कोन जेनेटिक डायवर्सिटी रो सिंपल मीनिंग कहले कि गोटिए लेट्स से गोटे हम कहबा जेमति लिखा छै सिंगल स्पीसीज लेट्स से काउ गोटे हला काउ गोटे सिंगल स्पीसीज से काउ रो बहुत वैरायटी हे पारे जेमति हम कहछे जर्सी काउ हे पारे बहुत प्रकार काउ अछि आर डिफरेंट अछि गोटे देसी हे पारे तो एमति बहुत प्रकार वैरायटी अछि तो ताको हम कहछे ओन जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ दैट स्पीसीज फॉर एग्जांपल हम कहछे फॉर एग्जांपल मोटे डॉग कथा नै जी लैब्राडोर हे पारे मिक्स्ड हे पारे रॉट लॉयर्स हे पारे तो डिफरेंट हमें देखिबा लेट्स से हमें कहबा ताकू दैट इज द व्हाट हस्क कथा नै छ so they are also having the different hame dekha jabo so that is the genetic diversity of that same species ro genetic diversity is the total number of genetic characteristics making up the genetics of a species गोटे species रो केते variety अच्छा मते ध्यान से देखिबो तुमको जो species richness रे कोन रहबो और difference मु टिके आउट ये कहि दे genetic diversity कहले गोटे फॉर एग्जांपल कैट मुको भी केते प्रकार कैट देखा जाय एटा genetic diversity of cat और जेते हम स्क्वायर species richness कहले केते प्रकार species देखा जाय सेठी बहुत प्रकार लेट्स हमको चिलिका कथा कहबी कि चिलिका रे तुमको डॉल्फिन देखा जबो बर्ड्स देखा जबो तुमको टर्टल देखा जबो तुमको स्नेक्स देखा जबो बहुत प्रकार दैट इज द स्पीसीज रिचनेस ओके सो स्पीसीज रिचनेस भीतर कनिका रो सबटो अधिक जदी हमर ओडिसा रे देखिबा भीतर कनिका वुड बी हैव द मैक्सिमम स्पीसीज richness as compared to any other so that would be there okay so hope you so youtube को समस्त आसी जाओ better to come the youtube को live को आसी जाओ समस्ते अच्छा जो मैंने youtube देखो जो क्लासरूम रे बसे कि is it fine comfortable to everyone the screen is welcoming to all genetic diversity is the total number of आमे कहबा हाना genetic species को मुकले जेमति कि चाइनीज इंडियन अमेरिकन अफ्रीकन ये जेमति होमो सैपियंस हमको बहुत देखा जाए इंडिया हैज मोर देन 50,000 genetic different strains of rice हम देखि परिबो 1000 variety of the mangoes that is the genetic diversity of that same species
कमेंट कर परिबो तो माने यूट्यूब रे जाई कि लाइव रे कमेंट कर परिबो आज मध्ये राती मो 10 रे भी लाइव आसीबी यूट्यूब रे लाइव आसीबी यूपीएससी एमसी को डिस्कस करबा हम सेथरे मध्ये है ना it would be there. So genetic diversity allows the species to adapt the changing environment. ताले genetic diversity रो importance कोन लेट्स से मु काउ कथा कहली ना बहुत प्रकार जदी काउ थिबो दे वुड बी ए माने कोन रहबो ना genetic diversity अधिक रहले आमानकर जो सस्टेनेबिलिटी रहइबो गुड इवनिंग एवरीवन सस्टेनेबिलिटी रहइबो गुड इवनिंग सुश्री संगीता नायक Sunita Roll, Mansi, so everyone, those who are watching me. तो जेनेटिक डायवर्सिटी में देखा कौन ना आम बहुत प्रकार जमी मुझे कहली कि राइस देख राइस इंडिया रे केते प्रकार स्ट्रेन देखा जाए मोर देन 50,000 species जदि हम देखा species that means differ from one another genetic makeup don't that is what interbreed in nature interbreed करेनी से माने अपने आप ही हो जाए है ना क्लोजली रिलेटेड तो स्पीसीज डायवर्सिटी हम कहवा जेनेटिक डायवर्सिटी कहले जेमती ह्यूमन बीइंग जो डिफरेंट जेनेटिक डायवर्सिटी थाए अफ्रीकान इंडियन चाइनीज अमेरिकन यूरोपियन निग्रोइड डिफरेंट हमर जेनेटिक डायवर्सिटी हमर मध्य रही ओके गुड इवनिंग आलोक सो दैट वुड बी जेनेटिक डायवर्सिटी हियर अल्फा गामा बेटा को आउ थे रिपीट कर दूची अल्फा डायवर्सिटी कहले विदिन बेटा कहले बिटवीन कहले ये गोटे तुम डायवर्सिटी लेट्स से 1 this would be 2 this would be 3 this would be 4 ए टोटल रो डायवर्सिटी को कहले गामा किंतु 1 and 2 भितर जदी देखिबी दैट वुड बी बेटा ओनली ए रो डायवर्सिटी को देखले दैट वुड बी गामा और अल्फा तेणु ए ओनली अल्फा कहले ओनली डायवर्सिटी विदिन इकोसिस्टम among ecosystem कहले बिटवीन सॉरी बिटवीन रे हम देखबा तुमको कोन देखा जो दैट वुड तो बेटा एंड among रेस्पो ऑल एठी देखा छ आरो मार्क भी तुम देखा छी पूरा लैंडस्केप रो ध्यान से मन रखो पूरा लैंडस्केप जाको हम कहू छी पूरा लैंडस्केप रो जदी आसीबो देन इट वुड बी आ जदी हम छोटिए गोटिए मैंग्रोव भाबो गोटे लेट्स से ओके बी मैंग्रोव रो डायवर्सिटी हम देखु छी दैट वुड बी अल्फा डायवर्सिटी इट वुड बी अल्फा डायवर्सिटी ओके गुड इवनिंग मधुस्मिता आलोक सो अल्फा कहले विदिन आउ थरे मु रिपीट कर दउची विदिन बेटा कहले बिटवीन it would be between and it would be among ये रहबो तमरो among so this is the basic difference हम कहबा alpha gamma and that is the beta so ये सब आसी जबो तमरो now comes to the here the species diversity देखो species diversity रो अर्थात कोन कहले गोटिए जगह रे केते प्रकार species हमको देखा जाए species diversity तो species रो population केते अछि है ना तो ये हमको देखा जाए it is the ratio of one species of population over total number of the organism across all the species in the biome गोटे biome कहले कोन हम पढिथिले आगुरु biome अर्थ कोन से गोटे natural vegetation for example rain forest ये गोटे biome है ना for example desert ये गोटे biome let's say boreal forest मु कहबो तुमको boreal forest ये भी गोटे biome रेन फॉरेस्ट ये डेसिडस ये these are the biomes कहले दैट मींस यदि आमे जे बायोम्स जानि गले तो सिंपल आमे कहबा होप ना एवरीबॉडी इज नाउ लाइव सो सिंपल यदि आमे देखिबा तो स्पीसीज डायवर्सिटी रे कोन देखिबा तो गोटे बायोम रे हमको केते प्रकार डायवर्सिटी देखा जाउची the ratio of one species population over the number of organism across all species in that particular given biome रे मन देखा जबो जीरो जदि कहूची would be indefinite है ना infinite जाको हम कहूचे infinite diversity तान से मार्को एटा बहुत important zero indicates infinite diversity one represent only one species present out there let's say भितर कनिका it would be zero किंतु आमे सपोज कोनसे गोटे जगह रे केवल एलिफेंट अछि लेट्स से ओनली एलिफेंट इज लेफ्ट इट वुड बी वन स्पीसीज बाकी स्पीसीज नाही जीरो कहले सेथरे बैक्टीरिया थाई परे सेथरे एलिफेंट थाई परे कहले स्मॉलेस्ट फॉर्म रो लार्जेस्ट फॉर्म को जाई परिबो तमे दैट वुड बी जीरो
कहले end number of species found in that particular region that will indicate in the zero. तो zero रो हम meaning बुझी साले and one अर्थात only one species would be dominant in that particular region. So zero means infinite diversity and one represent that is the only one species is present out there. The species diversity is a measure of the biodiversity is the measure of biodiversity within an ecological community that incorporate both the species richness and the species ଆମେ କେବେ richness ଆମେ ତାକୁ କହते richness ର अर्थ ଜାଣି ସାରିଛ and evenness. The species diversity is measure ଦି ପ୍ରକାର ଆମେ कहू गोटे richness गोटे evenness. बहुत थर ମୁଁ कहूची तुमको richness evenness richness कहले केते प्रकार देखा जाए evenness कहले गोटे तुलना रे आउ गोटे रो संख्या केते है ना ये होची बेसिक डिफरेंस हम देखिबा. Then in general species diversity decreases as we move away from equator towards the pole. This is UPSC favorite question. ये UPSC रो क्वेश्चन बनी जाए है ना कि हमें जेतोले इक्वेटर रु पोल को जाउचे towards the pole 0 degree towards the 90 degree the diversity will decrease. Why? Now because of the monotonous climate देखा जबो then there would be diversity climate और diversity धीरे धीरे कमी जबो. So it would be like this. The climatic condition favor करिबो नाही है ना and species रो जो richness and evenness both will reduce. In general the species diversity decrease हमें देखि देले with हमें कहबा very few exception the tropics latitudinal range 35 degree to हमें देखबा that means sorry 25 and 23.5 to neki 23.5 both the hemisphere more species than the temperate polar areas हमको देखे simple आगे हम repeat करू छे कि within with few very exception of the जो tropic area रे अछि the latitudinal range अछि 23.5 north and 23 both the hemisphere simple to south hemisphere the harbors more species than the temperate and polar कहले जति मु अर्थ को ड्रा करबी ये रहबो तमरो 23 and 23 तो समस्त जानछे 23 half that is the Capricorn and the Cancer. तो तापर जेतरा में सब पोलर रीजन को जाउचे बा कोनसी पोलर रीजन को जाउचे स्पीसीज रो richness and evenness will definitely reduce. आरो जति हम देखिबा काहे कि reduce होची ना richness and evenness reduce होबा एथि पे because of the climatic condition favorable no. So with very few exceptions the tropic latitude हमको देखि देले the stable community हम केबा then as we will come to the stable community के stable community कोन. A stable community means there is not much variation in the productivity from year to year. कहले बेसिक किछि variation हमको देखा जाउ नहीं. Stable community अर्थात तमे देखिबा कि से कोची means there is not much variation in the productivity. Let's say human कथा भी हमें कहबा human कथा हमें कहचे stable community अर्थात हमारा community रे बेसिक किछि changes आसु नहीं and this one is overall a stable population out there within a community area. हम कहबा it is neither resistant or resilient to the occasional disturbance natural or the human made and is resistant to our invasions by the alien species as well. तो ये कहूची कि यदि stable community means that would not make any kind of difference on that existing community. So जो community सेठी रहउछंती neither year to year रे अंकर किछि changes आसबो नाही neither in terms of the variation in terms of the production either the resistant they would be more resistant to the resilient or I would say the resilient to the occasional disturbance natural calamities with the man-made कथा नहीं जो or resistant to the invasive alien species as well so that एमने stable community है कि रहिबो नॉलेज यदि natural किछि प्रकार हम कहबा calamities आसीगला alien species आसीगला से community को disturb कर दबो तेणु ये disturb हबो नहीं एमानकर निजर capabilities अछि to withstand that adversities. Now comes to the species endemism and the hot spot. because species endemism गोटे कहते जाको कहजे endemic endemic रो अर्थात कोन कोनोसी गोटे species केवल सही एरिया रे ही मिले आर मीनिंग ओडिया रे जदि मु कहबी लेट्स से मु कहबी कंगारो कंगारो केवल ऑस्ट्रेलिया रे ही मिलिबो दुनिया रे कोठी मिलिबो नाही so it would be that means हम कहबा ऑस्ट्रेलिया और लेट्स से कोआला कथा भी नै जो only ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट रे मिलिबो बा कॉन्टिनेंट रे आ कोठी भी मिलिबो नाही so that is the endemic to that or let's say नीलगिरी थार कथा नहीं जाना तमे
नीलगिरी थार कथा नहीं जो ओनली नीलगिरी हिल रे मिलिबो बाकी कोठी मिलिबो नहीं नीलगिरी थार सो दैट इज एंडेमिक टू दैट एरिया अर्थात सही एरिया छाड़िले आ कोठी मिलिबो नहीं दैट इज द एंडेमिक रो मीनिंग सेया है ना एंडेमिक दैट मीन्स ए स्पीसीज फाउंड नेचुरली ओनली वन जियोग्राफिकल एरिया आसाम टी केवल आसाम रे मिलिबो आ कोठी मिलिबो नहीं सो दैट इज एंडेमिक टू द आसाम isolated geographical area such as island, lake, mountain range often have many endemic species. For example, I would say let's say for example the penguin. Let's say king penguin. I would say that is the king penguin which is confined to the Antarctica. Okay, they're very least they are found in the other region of the world. Okay, so notable the hotspot of the endemisms Madagascar बहुत important कथा मन रखो Madagascar Caribbean South East Asia South Africa तो ये केतेटा एरिया अछि जो थरे हमको देखा जो एंडेमिक स्पीसीज बहुत एंड Madagascar होची दुनिया सबटो हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ध्यान से मन को एटा बहुत इंपोर्टेंट दुनिया रो हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी Madagascar रे देखा जाए बहुत छोटिया कंट्री अफ्रीकन कंट्री Madagascar इंडियन ओशन रो अछि तुम मन देखि परियो मोजाम्बिक स्ट्रेट को जेते तुम क्रॉस करूछो यदि मो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एठी तुमको ड्रॉ करके देखैबी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना सो हियर इफ दिस वन इज द अफ्रीका कॉन्टिनेंट Madagascar इज हियर एंड दिस वुड बी द मोजाम्बिक चैनल तो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट रे तमरो Madagascar रहइबो Madagascar है ना ये दुनिया रो सबटो हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी कोठी देखा छै Madagascar रे तुमको देखा जबो दुनिया रो तो Madagascar हो गेला कैरिबियन तुम जानते कैरिबियन कंट्री जोटा तुमरो किंगस्टन जमाइका किंगस्टन वगैरह अछि अनफॉर्चुनेटली many experiencing the high rate of habitat destruction हमको बहुत देखा जाउची habitat destruction बहुत देखा जाउची this is very important in this particular region रे habitat destruction देखा जाउची ecological diversity now we will comes to the ecological diversity देखिए ecological diversity अर्थात कौन ecological diversity refers to the what different type of habitat इकोलॉजिकल को डिफरेंट टाइप रा हैबिटेट अर्थात जेमति गोटे मैंग्रोव हे गेला गोटे इकोटोन हे गेला मैंग्रोव गोटे इकोटोन और आई वुड से हमें कहबा गोटे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हे परे मारिन इकोसिस्टम हे परे ब्राकिस हे परे डेजर्ट हे परे एवरग्रीन फॉरेस्ट हे परे डेसिडस हे परे दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट ओके जो फिर रीजन रे कहबा it includes various biological zone like lakes desert जोटा coral reef mangroves wetland estuaries everything they will include तो ये सब रहिबो हमर हां बायोलॉजिकल दैट मींस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रे हम तको पुट करले एंडेमिज्म कहले अर्थात मु तुमको बुझेतली ओनली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया आउ कोठी देखा जबो नाही सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहले इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कारण एठी तुमको हॉट डेजर्ट भी देखा जबो एंड कांचनजंगा भलिया माउंटेन पीक मध्य देखा जो बा हम कहते सियाचेन ग्लेशियर कथा नहीं जो और इट वुड बी सियाचेन ग्लेशियर so that means that may be a glacier that may be a hot desert or that may be a deep forest हम कथा नहीं जो और मरीन वाटर कथा नहीं जो सो इंडिया रे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा एठी डेजर्ट देखा जबो एठी बैक वाटर देखा जबो एठी मरीन वाटर देखा जबो एठी रेन फॉरेस्ट देखा जबो एठी तुमको ग्लेशियर भी देखा जबो सो दैट मींस आरो जदी हम देखिबा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया रे बहुत ही ज्यादा ओके फाइन ओके होप एवरीवन इज गेटिंग मी एंडेमिज्म रो अर्थत कोन मु तुमको कहतली कि जेमति कि कोन सी एरिया रे गोटे स्पीसीज देखा जाए से आउ कोठी देखा जाए नहीं लेट्स से मुखबी रॉयल बंगाल टाइगर है ना ये एंडेमिक नुआ ये नेटिव स्पीसीज हां तमे कहबी एंडेमिज्म कोन एशियन दैट इज द लियन बा आमी जाको कहछि लायन ये केवल इंडिया रे देखा जाए एंडेमिज्म टू इंडिया वर्तमान जदि मु कहबी गोल्डन लंगूर नीलगिरी थार एशियाटिक लायन बेंगल फ्लोरिकॉन they are found exclusively in India that means they are endemic to India or the endemism there are more than like what it would be 2 lakh species in India है ना which several are confined to India or the endemics बहुत सारा केवल इंडिया रे देखा जाए बाकी जगह रे देखा जाए नहीं एंडेमिज्म मु कहली
कौन से गोटे जियोग्राफिकल एरिया रे देखा जाए बाकी एरिया रे देखा जाए नहीं जेमती मु तुमको कहली कंगार कथा नहीं चाहिए कंगार केवल ऑस्ट्रेलिया देखा जाए कोआला केवल ऑस्ट्रेलिया देखा जाए जेमती कि किंग पेंगुइन केवल अंटार्कटिका रे देखा जाए आउ कोठी देखा जाए सो दे आर एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन को हमें कहबा ओके ये हे जबो नेक्स्ट हम आसवा कीस्टोन स्पीसीज ये तो मु ऑलरेडी तुम को क्लास रे कहि सारिछि कीस्टोन स्पीसीज फिजिकल क्लासेस रे मध्ये कहि सारिछि कि कीस्टोन स्पीसीज कोन कहले कौन सी गोटे स्पीसीज जार संख्या कमी जिबा बा बढ़ी जिबा द्वारा पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जिवो फॉर एग्जांपल मु कहि एलिफेंट टाइगर दीज आर द कीस्टोन स्पीसीज आर संख्या बढ़ी गेले भी खराब कमी गेले सेट लिखि कीस्टोन स्पीसीज इज अ स्पीसीज whose addition or loss or subtraction from an ecosystem lead to the major changes in the occurrence at least one another species or other species टाइगर रो संख्या जदि कमी गला डियर रो संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ी जिवो डियर रो संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ी जिवो आ जदि आमे कहबा हां कि आ जदि टाइगर रो संख्या बढ़ी गेला डियर ऊपर प्रेशर पड़ी जिवो दैट मींस कीस्टोन स्पीसीज कले सही स्पीसीज को कहबा जार एडिशन बा सब्सट्रैक्शन और लॉस रे पूरा दैट विल लीड टू द मेजर चेंज इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम रासी जिवो The certain species in the ecosystem is considered more important determining the presence of any other species in the ecosystem. अर्थात से मार जमते यदि टाइगर मरी जिवो ना डियर संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ी जिवो है ना the tiger lion crocodile elephants they are the keystone or the top predators ए माने होचंती and they are the keystone species ए मान को कहती keystone species hence the top predators are given much that is the consideration in the कंजर्वेशन रे मान को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाए कारण मु तुमको ऑलरेडी कीस्टोन स्पीसीज विषय कहि सारी थी आगुरो कीस्टोन स्पीसीज इज लॉस्ट if keystone species is lost it will result in the degradation of the whole ecosystem रो degradation हे for example आमे देखबा certain plant जेम लिखे छी ebony गोटे ट्री बा इंडियन आमे कहबा laurel exclusively depend on the bats for its pollination ये जदि कमी जिवो ना ताले तारा पॉपुलेशन कमी जिवो ये होची तारा इम्पैक्ट कहले exclusively depend on the pollination पे bat पर डिपेंड if the bat population reduce then their generation बा तांकर मध्ये प्रोडक्शन कमी जिवो डिफिकल्ट हे जिवो here you can see the keystones like the shark ये देखि परबो तमे नो कीस्टोन एमान को संख्या बढ़ी जिवो तुरंत बढ़ी जिवो एमान को संख्या आंको संख्या बहुत कम अछि एठी डाइवर्सिटी देखो बहुत बढ़िया डाइवर्सिटी एठी डाइवर्सिटी कमी जिवो ए सब खाइ देबो तो इकोसिस्टम रे हेल्दी इकोसिस्टम रहइबो नाही तो कीस्टोन रहले that means it would be cow nose raise a feed on the that is the what that is bivalves and that is the arthropods so that is the what bivalves and arthropod population are stable एमान को population stable रहइबो यदि ये न रहइबो आंको संख्या बढ़ी जिवो आंको संख्या बढ़ी गले ये आंको खाइ के सफा कर देबे so that आमे कहबा कि यदि कीस्टोन स्पीसीज रहउती ना कि there would be diversity would be maintained simple मु कहबी डाइवर्सिटी जहाँ को हम कहते स्पीसीज रिचनेस हमें रिचनेस मेंटेन रहिबो रिचनेस भी मेंटेन रहिबो एंड इवननेस मध्ये दांत मन कहबो एंड इवननेस रिचनेस एंड इवननेस बोथ वुड बी मेंटेन स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस बोथ वुड बी मेंटेन फाउंडेशन स्पीसीज नेक्स्ट हम देखबा फ्लैगशिप स्पीसीज मु ऑलरेडी कहि सारिछि कि फ्लैगशिप स्पीसीज कोन फ्लैगशिप स्पीसीज कहले जोथि पई जणा जाए जेमति मु कहबी के भीतर कनिका कोन पई जणा जाए क्रोकोडाइल तार फ्लैगशिप स्पीसीज होची क्रोकोडाइल चंदका कोन पई जणा जाए एलिफेंट तार फ्लैगशिप स्पीसीज होची एलिफेंट ओके फॉर एग्जांपल सो फ्लैगशिप स्पीसीज इज अ स्पीसीज चूजन टू रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल कॉज है ना जेमति तुम इंडियन टाइगर अफ्रीकन एलिफेंट जायंट पांडा टर्टल लेदरबैक ये सब दीज आर द फ्लैगशिप स्पीसीज okay ताले हमके फ्लैगशिप स्पीसीज कोन स्पीसीज chosen to be present an environment cause such as an ecosystem need to be conservation कमे दरकार हुए अच्छा जाबियो फाउंडेशन स्पीसीज कोन फाउंडेशन स्पीसीज इज अ डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर ए गोटे प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम both in terms of abundance and influence the primary species हमें फाउंडेशन स्पीसीज कहले species is a dominant primary producer
in the ecosystem, both in terms of abundance and influence. Okay, like kelp forest आम देखा है ना, and the coral reefs एमानकर संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक फाउंडेशन स्पीसीज कवर एमानकर द्वारा ही बंची बाकी माने dominant primary producer माने primary producer in the ecosystem both in terms of the abundance and influence दी जणा influence भी करूची coral reef कथा नहीं जो coral जणे coral होती largest producer ए producer और influence भी आरो अधिक that would be foundation species. Here you can see some of the flagship species. तुम देखी परिबो polar bears, giant panda, tiger, turtle, that is the what minute. Here is the golden lion, bald eagle. तुम देखी परिबो here is the bald eagle, and they are very dangerous elephant as well. So these are the flagship species. Diversity in India. एबे हम देखिए इंडिया रे biodiversity. India होची गोटे मेगा डाइवर्स that is what diverse country in terms of जदि हम इंडिया रे देखबा ना इंडिया गोटे मेगा डाइवर्स कंट्री ये गोटे मेगा डाइवर्स कंट्री सो इंडिया को कह जाए मेगा डाइवर्स कंट्री तो ये बहुत प्रकार फ्लोरा एंड फौना तुमको देखा जिवो here would be many types of flora and fauna would be out there है ना बहुत प्रकार फ्लोरा एंड फौना हमको एठी देखा जिवो ठीक अछि जेमते कि मेगा डाइवर्स कंट्री को कह जाए है ना फॉर एग्जांपल मु कहबी इंडिया पाखरे केते लैंड अछि देखो 23.39 जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर एटा समझते जानिचो and only आम पाखरे 2.4% of the land इंडिया पाखरे 2.4% of the land 7% हमको species देखा जो 18% human population. Can you imagine the diversity of this particular country? So just imagine that we are having only 2.4% of the total land mass by area अछि सेइथिरे हमको देखा जो account 7% of the total recorded species 18% human population हमको देखा जो human population 18% in terms of the species richness 7th in the mammal 9th हमको birds and 5th and that is what 5th in reptile. So that means very huge country India गोटे एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा टिके मन रखिबो कना तुमको बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एटा लिखि परिबो कि आम पाखरे इन टर्म्स ऑफ 9th हमें देखिबा 7 रैंक रोचु हमें रिचनेस को नै कि है ना जदि हम देखो इन टर्म्स ऑफ द स्पीसीज रिचनेस इंडिया होची 7th होची कॉन्टिनेंट रे मध्ये 7 मामल्स केस रे देखि परिबो 9th इन बर्ड 5th इन रेप्टाइल बहुत दैट मींस हमको रेप्टाइल्स एटे देखा जाए in terms of the endemism vertebrates groups India's position is the 10th in birds 16 with 69 species 5th in reptiles and 7th in amphibians as well 110 species तुमको देखा जाए India shares of the crops 44% as compared to the global average 11 that means हमको हमें के crops मध्ये बहुत सारा diversity देखा जाउछ है ना इंडिया पाखरे कोनटा अछि देखिबो two realms and we are having two realms represents 5 biomes 10 that is the biogeographic zone and that is the 5 biogeographical provinces हमको देखा जाबो this is very important ध्यान से देखिबो दीटा realms हमको देखा जाए है ना हम पाखरे दीटा realms अछि गोटेला Himalayan region है ना that is the but Palearctic आ गोटेला Malayalam realm that is the what Malayan realm this is very important prelim रे तुमको पचारे कि हम पाखरे realm रो अर्थ कोन बहुत बड़ा एरिया है ना तो realm रो अर्थ हमें देखिबा हम पाखरे we are having two realm 5 biomes देखा जिवो 10 biogeographical zones 25 biogeographic provinces अछि हम पाखरे and then we will comes to the what hot spot as well we are also having the hot spots biological hot spot how many it would be 1 2 3 and 4 so we are having what 4 by that is what hot spot हम केबा hot spot हम पाखरे केतेटा अछि चारिटा हॉट स्पॉट अछि ये बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट आप सो चारिटा हॉट स्पॉट्स दीटा रेल्म्स पांचटा बायोम्स 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स 25 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस अछि तो रेल्म अर्थ कोन गोटे बहुत बड़ एरिया लार्ज स्पेशल रीजन within which ecosystem share in a broad similar biota देखा ए रेल्म इज ए continent
और द सब कॉन्टिनेंट हमको कहबा हमर दीटा realm रे फॉर एग्जांपल इंडिया मैप को तुम जे ड्रॉ करबो हिमालय रो आरपट हिमालय रो आरपट को नेले हम कह जे हिमालयन जोन व्हिच इज कमिंग अंडर द पैलिएट्रिक realm रे हमर जो पेनिनसुला ब्लॉक टा आसुची ये तुमरो मालायन realm रे आसुची हमर दीटा realm रे आसुची टू लार्ज realm हमर आसुची ओके एबे हम देखिबा the 8 terrestrial biogeographical realms are typically recognized जेमति तुमरो नेरेटिक्स पैलेटिक्स Africotropics, Indo-Malayalam realm, Oceanic, Australian, Antarctic, and it would be Neotropical realm. India पाखरे दीटा अछि that means आमे पाखरे आमे देखबा that is the Himalayas or the Palearctics असबो आ गोटे असबो तुमरो Malayan. Two realms आमरो दीटा realms अछि आ गोटे के मन रखो that is what two realms in terms of the Malayan and one terms in another one is one this would be two Malayan and Palearctic realms achi then now we will comes to here you can see the realm